कांग्रेस पार्टी का एक योगदान समारोह में आमसू का पूर्व नेता प्रेसिडेंट रेजाउल करीम सरकार ने एक भाषण में तो बोला था जो अहोम जो कैपिटल था हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट शिवसागर और अपर असम का तिनसुकिया ज़िला को धुबरी बनाएंगे। ये बात को हम ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद ने कंडेम किया है, निंदा किया है और रेजाउल करीम सरकार को हम लोग ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद से बोल रहा है, रेजाउल करीम सरकार तुम ऊपरी असम के ऊपर में जो बात बोल रहा हो इसलिए तुम क्षमा मांगो। अपर असम का जो इंडिजिनियस असामीज पीपुल से तुम क्षमा मांगना पड़ेगा। और मिस्टर गौरव गोगोई प्रेसिडेंट APCC आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आपको हम ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद की केंद्रीय समिति से आपको आह्वान कर रहा हूँ जे आप रेजाउल करीम सरकार की जो स्थिति है उसका ऊपर आप स्टेप लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए और रेजाउल करीम सरकार को कांग्रेस की जो योगदान किया था उसके ऊपर कठोर आप स्टेप लीजिए। अपर असम मुस्लिम कल्याण परिषद ने इसलिए चेतावनी दे रहा है रेजाउल करीम सरकार जब तक इस स्थिति का ऊपर वो क्षमा ना मांगे तो अपर असम को 9 जिले में उसका प्रवेश निषिद्ध कर रहा है। हम लोग अपर असम में रेजाउल करीम सरकार का प्रवेश हम लोग निषिद्ध कर रहा है, बैन कर रहा है। वो क्षमा मांगना पड़ेगा। अपर असम का जो इंडिजिनियस असामीज पीपुल है सबका ऊपर जो बात किया था, कारण अपर असम के हिस्टोरिकल जो डिस्ट्रिक्ट है वो अहोम का 600 ईयर का कैपिटल है। इसीलिए इस कैपिटल से हम चेतावनी दे रहा है उसको, वो रेजाउल करीम सरकार जो आमसू का सांप्रदायिक नेता है उसको हम चेतावनी दे रहा है। और गौरव गोगोई को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए हम लोग ऊपरी असम मुस्लिम कल्याण परिषद के प्रेसिडेंट की तरफ से मैं मनिरुल इस्लाम बड़ा उसको अपील कर रहा हूँ। धन्यवाद। आमार प्राक्तन आमसुर सभापति रेजाउल करीम सरकारे जीतु योगदान कार्यसूचीर पाছত जीतु मन्तव्य আগবঢ়ালে এইবোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। তেখেতে কৈছে উজনি অসমৰ তিনচুকীয়া জিলা আৰু শিৱসাগৰ জিলাক তেওঁ ধুবুৰী বনাবলৈ যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে তাত আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ নিচিনা এটা সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰ যোগদান কৰিবলৈ গৈ তেওঁ এনে নিম্ন খাপৰ মন্তব্যই আমাক হতাশ কৰি তুলিছে। যিহেতু সেই অনুষ্ঠানত বিধায়ক আমাৰ নাজিৰাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু যোৰহাট সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ সংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত থকাৰ অৱস্থাত তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যই যে কংগ্ৰেছক সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ধ্বংসমুখলৈ লৈ গৈছে এইটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব লাগিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে তৎক্ষণাৎভাৱে তেওঁলোকে তেওঁক বৰ্খাস্ত নকৰিলে আৰু নিউজটো কণ্ডেম নকৰিলে। ৰাইজৰ মাজত যেতিয়া প্ৰচাৰ হ'ল, ৰাইজে যেতিয়া ডাঙৰ খাই উঠিলে তেতিয়াহে তেওঁলোকে কণ্ডেম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এইটো এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ধুবুৰী তেওঁ শিৱসাগৰত ধুবুৰী বনাবলৈ যোৱা কথাটো, তিনচুকীয়াক ধুবুৰী বনাবলৈ যোৱাটোৱে তেওঁ কি মিনিং কৰিছে এইটো ৰাইজে বুজিবলৈ আৰু বাকী নাই। তেওঁলোকে বংগভাষী মানুহ লৈ তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলে, বংগভাষী মানুহ লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে। তেওঁলোকে শিৱসাগৰত কি বংগভাষী মানুহ দি পেলাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিব নেকি? তিনচুকীয়াত বংগভাষী মানুহ দি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিব নেকি? এইটো উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু ইমিডিয়েট ৰেজাউল কৰীম চৰকাৰক কঠোৰ এটা বৰ্খাস্তৰ নিচিনা এটা সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মন্তব্য তেওঁলোকে নাৰাখে। কাৰণ যিহেতু অহা কেইদিনমানৰ পাছতেই বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আছে, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে। কংগ্ৰেছে কোনটো মুখে দি পেলাই ৰাইজৰ মাজত সোমাই আহিব? গতিকে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ আমাৰ দুইটা সমষ্টিয়ে আমাৰ
এক্টিয়াৰ ভিতৰত পৰে গতিকে তেওঁলোকে এনেকৈ ধৰণৰ ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নাৰাখিলে ৰেজাউল কৰিমেই নহয় কোনো ধৰণৰ লিডাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নাৰাখিবৰ কাৰণে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিয়া হ'ল ধন্যবাদ